Okay. So yes, Assalamu alaikum class, and welcome to today's lecture. So today I'll be talking about a new upcoming terminology or a concept or a phenomena. So हम जब बात करते हैं then that climate change is happening, this is increasing, disaster risks are increasing. So our environment or our infrastructure particularly should be more adaptive and more resilient. So these two concepts of adaptive and resilient infrastructure has now come across and now is being integrated particularly into the civil engineering perspective. So it's a very essential topic in the face of climate change and increasing disasters frequencies. Now our cities are basically buildings are built sometimes against the building codes sometimes, right? So they are very much vulnerable to floods, earthquakes, and extreme weather events. So today we'll be talking about how different structures or some of the terminology or some of the words I will be using would be particularly familiar to our engineering students, but for some planners or architects, for there might be something new to them. So we'll go into those. So this lecture basically aims to explore how we can design structures or infrastructure in an area that it can survive these climatic changes or challenges, and but it can then adapt or can be resilient enough against the disaster. So we'll be touching upon some different code principles, some different terminologies, and then some recommendation how to incorporate this adaptive and resilient infrastructure in our frameworks or in our policies. So yes, so adaptation. So we'll be revisiting our terminologies like adaptation. We've talked about what is climate change. Adaptation is basically long-term, uh, long-term structural adjustments against climate variability or climate change. And resilience is an ability to cope, anticipate, recover from particular disaster. So growing with risks, we need to incorporate both of these philosophy in our infrastructure. अगर हमारा कोई भी इंफ्रास्ट्रक्चर इन चीजों को फॉलो कर रहा है, इस प्रिंसिपल्स को या डेफिनेशंस को फॉलो कर रहा है, we can call it as an adaptive or resilient infrastructure. But हम जो resilient infrastructure से मुराद हैं, what do we mean by resilience in construction industry or civil engineering industry? Civil engineering. So simply it is basically an ability of a building. Just apply the definition of resilience. समझो resilience की generic सी definition है, ability to cope up, anticipate and respond to to these events. So it is basically अगर उसी definition को भी apply it on a structure or a building or any physical form like road or bridges or buildings, we can say an ability of a building or an infrastructure system to withstand and recover from a particular extreme event. It can be heat wave, flood, or anything. Right? So resilient structures are designed to just not only resist कि आएगा और टकराएगा. जो building codes में आमतौर पे हम बात करते हैं that whenever a disaster or a climate change event interacts with the building should withstand कि जी उसको absorb कर ले, उससे गिरे ना. Right? So these are the primarily you can say the essence of buildings code कि इस तरीके से आपने बस बिजली गिरे ना. ठीक है? But imagine अगर हम कहें कि it will now absorb the shock and go back to normal position as quickly as possible. या अगर डैमेज हो भी जाए तो इस तरीके से अगर डैमेज होकर रिपेयर करनी पड़े तो क्विकली डैमेज हो और रिस्टोर हो और उसमें फंक्शनैलिटी go back to the original state फॉरन. So that is principle of it. Like हम स्पोन सिटी की बात करते हैं कि हमारे इंफ्रास्ट्रक्चर ऐसा हो कि इट कैन absorb the water and then it can quickly go back once the water recedes. So इसमें तीन एलिमेंट्स हैं आमतौर पे. इसको ड्यूरेबिलिटी या कह लें, रोबस्टनेस कह लें, रिडंडेंसी कह लें, एंड देन इज some people call it recovery oriented, meaning it can come back from a. So what does durability mean? So durability ये ज्यादा ड्यूरेबल है, ज्यादा देर तक रहेगा, something. So infrastructure which is built with materials, certain materials that can withstand or can resist an earthquake.
सो हमारे पास मटेरियल्स में बड़ी एग्जांपल्स हैं, हमारे पास बिल्डिंग कोड्स में बड़ी एग्जांपल्स हैं कि अर्थक्वेक आया, इस ना कि सिस्मिक रेजिलिएंट या सिस्मिक रेजिलिएंस नहीं कहूंगा मैं, सिस्मिक रेजिस्टेंट कहूंगा। बिल्डिंग्स बना दें and then we can building earthquake में अगर earthquake आया तो building will not collapse, so that is durable. So that is the job of building codes and which we are trying to do, right? But the rest of the world have moved on to adaptive and resilient infrastructure. उसमें जो second हम बात करते हैं redundancy की, कि let's say अगर part of infrastructure, जरूरी नहीं building हो, infrastructure means अगर let's say grid station है, कि अगर उसका एक पार्ट ग्रिड का या एक पार्ट ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर कोलैप्स कर जाता है या डैमेज हो जाता है, रेस्ट ऑफ द इंफ्रास्ट्रक्चर कनेक्टेड सिस्टम्स विल ऑपरेट नॉर्मली और एटलीस्ट कैन क्विकली रिस्टोर, कि अच्छा यहां से हमारे रोड्स बंद हो गया, हम इसको इसका डेफिनेशन देते हैं कि आपके एक ए टू बी पॉइंट पे जाना है, आपके पास मल्टीपल पाथवेज हैं, अगर एक पाथवे या एक रोड कोलैप्स भी कर जाता है, वी हैव ऑल्टरनेट रूट्स, तो क्या होगा, जो लोग ए से बी जा रहे हैं उनको पता चल जाएगा ये रोड बंद है, बट दे कैन टेक ऑल्टरनेटिव रूट्स। इसी तरह रिडंडेंसी का मुराद ये है कि इवन इफ सर्टन क्रिटिकल सिस्टम्स fail, we have backup alternate pathways that will continue the functionality of that system. So एग्जाम्पल के पावर सिस्टम्स की भी हमने बात की, ग्रिड, एक ग्रिड स्टेशन अगर डाउन भी होता है तो उसकी वजह से पूरी सिटी में ब्लैकआउट ना हो, या अगर हो भी जाए तो दे वी कैन स्विच फ्रॉम वन ग्रिड टू अनदर ग्रिड क्विकली, कि हमारे पास वापस से रिस्टोर करना है सिस्टम, सो दैट इज रिडंडेंसी। देन इज रिकवरी और ओरिएंटेड या रिकवरी इस तरह कह सकते हैं, विच इज दैट वी नीड टू रिस्टोर या रिपेयर। फॉर एग्जांपल हम कम पैसों में as soon as possible we reconstructed, reducing the downtown or economic loss, so that is recovery oriented. So any structure having these capabilities or characteristics, we can call it as a resilient infrastructure. Now this is primarily from a disaster point of view, ठीक है, लेकिन अब हम क्लाइमेट चेंज की बात करते हैं तो उसमें अडेप्टिव का बात आ जाता है। अडेप्टिव ऑन द अदर हैंड इट गोज, इसको कुछ लोग कहते हैं अडेप्टिव डिजाइन एज वेल, कि हमारी जो बिल्डिंग है इट शुड बी रिजिलिएंट एज वेल एज अडेप्टिव, इट गोज वन स्टेप बियॉन्ड रिजिलिएंट। इट्स नॉट जस्ट अबाउट सॉरी, it's just not about bouncing back and restoring to original state. It is about adjusting to the long-term impacts of these changes. जब आपको पता है कि इस चीज से अब ये फ्यूचर में और नुकसान हो सकता है, उस तरीके से प्लान अहेड करें। लाइक फॉर एग्जांपल इंक्रीजिंग हीट वेव को पता है इंक्रीज होता जा रहा है, सो अडेप्टिव स्ट्रक्चर्स कैन आर दे फ्लेक्सिबल इनफ टू अकोमोडेट इंक्रीजिंग टेम्परेचर्स और नॉट। फॉर एग्जांपल मैं साथ साथ कुछ लोग आ रहे हैं उसको मैं ऐड भी कर रहा हूँ इस तरह। ओके, so are buildings designed in such a way that they are cool, like they are cooled in heat wave, for example, they are cooler than the rest of the parts because they have included kind of nature-based solution or green roofs, or they have structure इस तरीके से बिल्डिंग बिल्ड हुई है कि उसमें एनर्जी कम से कम इस्तेमाल हो, राइट? सो एनर्जी इंटेंसिव एयर कंडीशनिंग की जरूरत कम से कम हो, नेचुरल वेज पाथवे ज्यादा हो, उससे आपकी कॉस्ट और सारा कुछ गिर जाता है। सो इट इज एनी स्ट्रक्चर विद दिस इन माइंड दैट वी कैन प्लान फॉर द फ्यूचर एज वेल। तो उसमें मॉड्यूलरिटी का बड़ा कॉन्सेप्ट है, जिसमें हम कहते हैं जी मॉड्यूलर फूम्स आपने सुना होगा कि जी उसमें से हम एक चीज निकालेंगे, एक कंपोनेंट ऐड कर देंगे। सो एनी ग्रिड स्ट्रक्चर है या कोई स्ट्रक्चर पड़ा हुआ है, उसमें से कोई कंपोनेंट निकालेंगे, रिपेयर करके हम वापस लगा देंगे। सो दैट इज मॉड्यूलरिटी। डिफरेंट मॉड्यूल्स, मॉड्यूलर कंस्ट्रक्शन में भी वर्ड यूज होता है, डिफरेंट टाइप ऑफ मॉड्यूलर इंफ्रास्ट्रक्चर होता है कि डिफरेंट पार्ट्स एडजस्ट कर सकते हैं पजल की तरह। देन स्केलेबिलिटी, जैसे जैसे आपका शहर बढ़ेगा यू नीड टू एक्सपैंड द इंफ्रास्ट्रक्चर, जैसे जैसे उसकी स्केल अप करे जाएंगे अप या डाउन, and it is then easily replaceable, modularity भी उसमें। So and then again the most important component, flexibility. It is designed in such a way that it will be adjusting different varying conditions of climate change, whether it can be, you can say, weather pattern, can be change in for example population density or economic. So this is basically characteristics of adaptive infrastructure. Any questions? If anyone has, please raise your hand kindly. So again, students can say, sir, what is the difference between those two things?
So resilient structures are basically designed to resist shocks, sudden shocks या coping capacity. अर्थ को गया, टकराया, just okay, let's cope with it, let's withstand it. Adaptive structures are basically slow होते हैं, slow कह लें, जिस तरह shocks are sudden, right? But adaptive is more of a long-term thing, and it's about anticipation कि future में क्या होगा तो हम किस तरीके से react करेंगे. So resilience is here in this infrastructure. Resilience is more about recovery, whereas adaptation is more about anticipation of the future. But ideally क्या होना चाहिए? We need to adapt both of these things. We need to अगर हम एक ही infrastructure के अंदर दोनों चीजें डालेंगे, adaptive and should be resilient enough, then we can have adaptive and resilient infrastructure. A structure that can absorb shocks and adjust to future conditions will give us maximum protection as well as sustainability. So these are the two concepts. अच्छा, अब इसके अंदर हमारे क्या क्या यूज करते हैं different engineers, ये तो updated या लें कह लें कि updated materials or engineering techniques, they are getting advanced and advanced, and I'm sure you students might know even more than me. But under this philosophy or a design philosophy, you can say, हम इसमें क्या क्या कर सकते हैं? We are designing adaptive and resilient structure. For we need some core principles. So first of all, जो कि आप urban planning में more or less होता ही है कि we need to consider site specific planning in which we consider like flood plains or seismic zones. उसको देखते हुए correspondingly infrastructure की designing हो. Then we use some kind of resilient materials. Now अब ये resilient materials क्या है? Fiber, reinforced concrete है, engineered timber है. Like there are so many different materials out there. So which are again new materials are coming in and again, nano materials are coming again and again. So these new materials which are more resilient, sustainable, and more strong. So yeah, they are coming again more or less. So other now strategies like for flood prone areas, elevations are becoming a most very important thing. Elevating the structures, or sometimes now this is a very when in designing a structural design, we use different performance based buildings, or there are different again philosophies within the design of civil engineering itself. So base isolation, saying even if the building vibrates, the building stays still and kind of only the foundation can move and absorb the shock. So different terminology and concept there. So these are coming up in seismic technologies, anchoring some kind of foundation or something. So this is technical engineers might know better than they. So we must also incorporate the smart technology of sensors like structural health monitoring, which kind of gives us a real-time monitoring and response to different disasters. So these technologies or principles are existing. But some material examples are some innovative materials, like these are last 10 years, 20 years thing, that the new concept of self-healing concrete that can, if exposed to air, once it is constructed and a building is cracked, and then the cracks is exposed to air, then that exposure will allow the materials inside that is called self-healing concrete, in which it automatically starts filling itself if it exposed to certain air. So it can fill cracks. So they are memory alloys that can remember that okay, we have to form back to the original position to not have deformation too much or permanent deformation. So these things or these concepts are again coming again and again. So we need to incorporate them. Then another is the technological innovations. So this technology is transforming how we design and manage our building. Like the concept of smart cities are there, and GIS, digital twins, BIM, building information modeling. So many technologies are out there. So we now know what Internet of Things based sensor that they are interlinked together and they communicate in real time, and then they make the scenes accordingly. So using those sensors, we can monitor stresses in the building or some cracks or maybe environmental changes in the real system. So in real time. So digital twins, anyone who know what is digital twin? Anyone? किसी को पता हो digital twin क्या होता है? Anyone?
सर हम उसका विजुअल मैप बनाते हैं उसी सिटी का 3D। Yes, exactly. So very common in upcoming thing in GIS thing. So it is basically a virtual model of an area और जो रियल टाइम एरिया में लेट्स से सिनारियो आपने सर बेस्ट होता है, इसमें मुख्तलिफ सिनारियोस हम फीड करते हैं और उस हिसाब से वो 3D मॉडलिंग के जरिए उसको वो शो करता है। सिंगापुर में ये मोस्ट कॉमनली ये यूज हो रहा है, उन्होंने इसको क्या है। ओके थैंक यू साकिब थैंक यू। सो इट इज बेसिकली लेट्स से नस्ट का एक मॉडल है। नस्ट हमने देखी है पूरी S12 है। S12 का जितना भी इंफ्रास्ट्रक्चर है लैंड यूज है मैं उठा के उसको डिजिटल एक 3D मॉडल बना देता हूँ उसको और उसमें सिनेरियोज रन करता हूँ कि नेक्स्ट 20 या 30 ईयर्स में अगर इतनी हीट वेव आएगी तो कहाँ हीट स्पॉट बॉट्स बनेंगे। तो क्योंकि वो वर्चुअल मॉडल एक्चुअली रिप्रेजेंट कर रहा होता है आपका रियल जो एक्चुअल बिल्डिंग है उसका हम डिजिटल ट्विन उसको डिजिटलाइजेशन कर देते हैं ठीक है। सो वी कैन कॉल इट डिजिटल ट्विन। उसमें हम मॉडलिंग सिनेरियोज रन करके अपने हीट वेव्स आइलैंड इफेक्ट वह करके हम चेक कर सकते हैं कि फ्यूचर में वेयर वी नीड इट। सो लाइक फॉर एग्जांपल 3D मॉडल में ही हम चेक कर सकते हैं कि यहाँ हीट वेव है और इधर हीट वेव करने के लिए अगर हम ग्रीनरी लगा लेंगे तो कितना हीट वेव का रिस्क रिड्यूस हो जाएगा। सो वी कैन प्ले अराउंड विद इवन वी कैन प्ले अराउंड विद द डेंसिटीज ऑफ वेजिटेशन कि यहाँ अगर देनी है तो यहाँ बेस्ट है और यहाँ दे सकते हैं और भी जगह हो सकती है और कहाँ देना इज द बेस्ट। उस पर हम साथ में ओवरले कर सकते हैं आपके विंड फ्लोज humidity. So we can model that urban heat island effect kind of a thing, and then we can find out that okay, these are in the future और उसमें फिर हम थोड़ी सी कह लें GIS की या प्रिडिक्शन मॉडलिंग लगा के हम वी कैन मैप आउट द अर्बन स्प्रॉल या डेवलपमेंट के अच्छा इतना शहर फैल रहे हैं तो फ्यूचर में अगर शहर इस तरीके से फैलेगा भी तो थ्री डी में और अगर सारी इफेक्ट इन्वायरमेंटल फैक्टर्स इंफ्रास्ट्रक्चर फैक्टर सारे इनकॉर्पोरेट किए गए तो मुझे पता चल सकता है कहाँ स्ट्रक्चर इवन फेल हो सकता है इन द फ्यूचर। सो इट्स अ काइंड ऑफ अ प्रिडिक्टिव मॉडलिंग थिंग। सो डिजिटल ट्विन इटसेल्फ बनाना भी मुश्किल है देन उसको मेंटेन करना अप टू डेट रखना एंड उसमें सिनेरियो मॉडलिंग करना इसमें बहुत ज्यादा कंप्यूटिंग पावर चाहिए। लेकिन once it's there we can get a very good models which can inform our decision making कि अच्छा फ्यूचर में अगर ये होना है why not we start doing steps right now। so working with the thing in the future कि हम इस तरीके से काम करना चाहते हैं। so different modular construction की भी हम बात की which can quickly assemble a new infrastructure parts and then of course some smart systems इसमें early warning system भी integrate कर सकते हैं कि it can warn people before it strikes। like in Japan now they have that's it gives you 2 second 3 second alarm before when an earthquake strikes। so आपको 2-3 seconds भी अगर लोग जाग रहे हैं तो 2-3 seconds are enough to go under the table or go जहां भी आप बाहर निकल सकते हैं so you can mentally be ready and then move out। so those innovations are actually happening in the field। अच्छा benefits of course हम बात करते रहे साथ साथ benefits are there। so we can have a reduced damage loss from disaster, firstly saving lives saving money। then of course we will have less maintenance over time thanks to this durability के concept में हमने बात की। so structure can have a safety and a continuity element to operations and during the crisis even right so it will give a well-being and safety as well। and of course the environmental aspect green infrastructure for example it supports the sustainability goals and reduces carbon emissions। so benefits of course the same benefits if you use any kind of mitigation techniques so it can help out in climate change and global challenges। सब लेकिन हम जब चैलेंज की बात करते हैं तो पाकिस्तान में सबसे बड़ा चैलेंज यही है फाइनेंशियल कॉस्ट। अब फ्रंट हम इसकी इंफ्रास्ट्रक्चर कॉस्ट ज्यादा है हम ये नहीं कह सकते कि जी लॉन्ग टर्म अगर हम देखे जाएं तो हम कहते हैं ओके सस्टेनेबल है फिजिबल है इट कैन सेव लाइव्स एंड मनी बट द फर्स्ट स्टार्टअप और फर्स्ट हायर इनिशियल कॉस्ट है वेरी मच हाई। सो गवर्नमेंट मे स्ट्रगल to justify those upfront costs, especially in developing countries like Pakistan, which we have limited budgets for development। Uh, then, of course, policy gaps are there। Uh, we have some traditional in construction sectors that they are very much rigid. They are not ready to adopt new practices as well. So, and we are not saying that, okay, we are not preparing for the, like, we cannot base our construction based on future prediction because we have the lack of data and forecasting for our
एट अ फाइनल या स्मॉल सिटी स्केल तक हमारे पास इतना डाटा नहीं है प्रोडिक्शन मॉडलिंग का। दुनिया में तो हम कह सकते हैं जी अच्छा जी अगले 20 साल 30 साल 40 साल में ये होगा वो होगा, लेकिन हमारे पास जो माइक्रो मॉडलिंग है, माइक्रो अर्बन क्लाइमेटिक मॉडलिंग है, छोटे लेवल पे जाके वो उसकी फोरकास्टिंग पाकिस्तान में एग्जिस्ट नहीं करती। सॉरी, इतनी जल्दी नहीं होगा तो। Okay, so then of course is sometimes technological gaps भी हैं। uh, उसके लिए uh, उसके लिए we don't have technical expertise as of yet, and sometimes we don't have access to these technologies or software। जो हम डिजिटल ट्विंस की हम बात कर रहे हैं, एडवांस मॉडलिंग सॉफ्टवेयर्स, कंप्यूटिंग पावर्स भी चाहिए होती हैं, तो इसके लिए हमें सिमुलेशन रन करना दे बिकम डिफिकल्ट एज वेल। So despite this, people in the US especially, they are adopting this. It's about having a widespread adoption in engineering field. So now I have seen also PhDs, research proposal are being like students can submit proposal on these topics, and it is becoming up and new thing, particularly from engineering perspective. जब engineering कहते हैं कि how we can do climate change और डिजास्टर में तो बहुत हम वो काम करते हैं इंजीनियर्स, सिविल इंजीनियर्स की मैं बात कर रहा हूँ। So they are structural engineers, they are very much concerned with the resilient part, but they are not very much familiar with the adaptive infrastructure. So that is becoming a new thing, that climate change को इंजीनियरिंग के अंदर कैसे ऐड करें, तो लोग उसको adaptive infrastructure के फिलोसफी से एक्सप्लेन कर रहे हैं। So ठीक है, इसकी कॉस्ट होती हैं, बट इन द एंड पे ऑफ भी अच्छा है। बट अगेन इसकी लैक ऑफ अवेयरनेस भी है, टेक्निकल कैपेसिटीज नहीं है, अभी इसमें चीजें ऐड होंगी। और इवन हमारे जो बिल्डिंग कोड्स हैं फॉर एग्जांपल, दे आर नॉट येट सपोर्टिव ऑफ दिस इनोवेशन और रेजिस्टेंस टू। सो पीपल ट्रेडिशनल अप्रोचेस भी आपकी हम बात कर रहे हैं, सो बिल्डिंग कोड में भी ये चीज होनी चाहिए। सो इन द व्हाट आर द स्ट्रेटजीज, फर्स्ट ऑफ ऑल इंटीग्रेटिंग और मेन स्ट्रीमिंग इन डीआरआर इनटू प्लानिंग। सो अर्बन प्लानिंग की बहुत अप्रोचेज हैं, पार्टिसिपेटरी प्लानिंग, इंक्रीमेंटल प्लानिंग, एंटिसिपेटरी प्लानिंग इज वन ऑफ इट, दैट वी प्लान in keeping in mind what will happen in the future. So anticipatory, especially from a climate change perspective. So then that's one thing. So government must update their building codes to reflect the resilience and adaptation standards in their codes, which is currently missing. Maybe give some kind of tax incentives to people to construct this kind of buildings. Encouraging retrofitting and smart design, you can say. So we also need a community engagement. So before anything, without social or community support, we cannot build that. That's also another thing. And of course, collaboration. The main thing is collaboration between engineers, planners, architects, ecologists, and policymakers is important to highlight this philosophy in urban infrastructure planning. Infrastructure planning is another field which crosses between urban planning and infrastructure. So infrastructure planning. So uh, so but this infrastructure or this adaptive and resilient infrastructure is not now only optional, it is now necessity. We have to do that. We have to do it because अब यही हमारा, हमने जो भी आगे प्लानिंग करनी है क्लाइमेट चेंज के पर्सपेक्टिव में ही कर रहे हैं, अनलेस एंड अनटिल कोई नया हमारे पास रिस्क आ जाए एआई का या एलियन इन्वेजन। सो climate risks are rising, our climate risks are rising. We have to be very much proactive, leave our reactive attitude behind. We have to be proactive in that aspect. So whether you are a planner or an engineer, we must be very much flexible enough to to you can say integrate these characteristics in our development policies as well as develop building codes. So that's the future, I think. So that's enough from my side. So this was a new thing which is I recently gave a presentation on to NDMA. This is the presentation I gave to NDMA. So we wanted to incorporate different elements of this adaptive and resilient infrastructure in the NDMA planning principles. And there they have a new unit called infrastructure and development wing. So they're doing infrastructure audit of all the infrastructure in Pakistan.
And then if the vision stands, then we are trying to inculcate this kind of philosophy in the mindset of the institutions and engineers. So the NDMA or the Ministry of Climate Change, they can work together and they can all the infrastructure they are planning for the future. अगर हम बात करते हैं जी ये नई ट्रेन बनानी है, नई रोड्स बनानी है, तो उसमें ये चीज अभी से ही इनग्रेन हो, ताकि इन केस अगर उस रोड को या उस ट्रैक को या रूट को डैमेज हो, we can cope up with it, we can anticipate, absorb the shock, and then be ready for the future as well. So different philosophies are, of course, ये एक philosophy है larger end पे. इसके अंदर सब components और सब components को लोग different तरीके से, different engineer, different discipline इसको different तरीके से देखते हैं. For example, smart health वगैरह बात है, वो लोग उसको structure health monitoring की तरफ ले जाते हैं और rehabilitation की तरफ करते हैं बात. They're also right, but they can be then fused under the philosophy of adaptive and resilient infrastructure. So that's enough for today. So any questions, class? Please. Any feedback? Anyone? Please. Okay, so I'm going to stop.